Hello बच्चों, let's read this question. The question says which scientist made significant contribution in the field of animal classification. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से साइंटिस्ट जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस है ए ओपेरिन, बी लिन्नेस, सी लेमार्क एंड डी पास्टर. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो क्लासिफिकेशन इज व्हाट, इट इज द मेथड, लाइक इट इज द मेथड. इसमें क्या होता है, जो अरेंजिंग, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है इनटू द ग्रुप्स. मेथड ऑफ अरेंजिंग the organisms into the organisms into groups is known as classification. तो जो scientist which made significant contribution in the field of animal classification is Linnaeus, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is also known as the father of modern taxonomy. It is popularly known as the father of taxonomy. And taxonomy की अगर हम बात करें तो taxonomy is what, it is the branch of science that deals with nomenclature and classification of various organisms, that deals with nomenclature and classification of various organisms. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरलस लिन्नेस एंड क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो है कैरलस लिन्नेस जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था. बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंक्लूड करता है क्या, टू नेम्स. बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कुछ रूल्स उन्होंने दिए थे जिस बेसिस पे नेमिंग होती थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की. तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड करता है टू नेम्स, दैट इज फर्स्ट इज जीनस नेम एंड सेकेंड इज स्पीशीज. जब जीनस एंड स्पीशीज नेम को साथ में लिखते हैं तो द नेम इज नोन एज साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम. तो कुछ रूल्स थे विच ही हैज गिवन कि जो जीनस नेम का जो है लाइक जो जीनस नेम है इट बिगिंस विद द जीनस नेम बिगिंस विद द कैपिटल लेटर वाइल जो स्पीशीज नेम होता है इट बिगिंस विद द स्मॉल लेटर. Next is both of these names, that is genus and species name, should be printed in italics. And when it's handwritten then it should be underlined. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस. होमो सेपियंस. होमो में लाइक होमो इज द जीनस नेम while sapiens is the species name. And according to the रूल्स, जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का इट शुड बी कैपिटल एंड स्पीशीज शुड बी स्टार्ट बिगिंस विद द स्मॉल लेटर. एंड जो अगर ये इसको प्रिंट किया जा रहा है तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, वाइल अगर हैंड रिटन है तो इट शुड बी अंडरलाइन जैसे हमने किया है. तो दिस आर दी लाइक दिस आर फ्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैरलस लिन्नेस. And another thing is he has also given an contribution in the artificial system of classification. Artificial system of classification. अब जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है यहाँ पे ओपेरिन. ओपेरिन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. ओपेरिन के अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ओपेरिन गिव्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और ओपेरिन proposed the
or give throw light some on the origin of life on earth. Next is Linnaeus, which is the correct option here as per our discussion. C is Lamarck. Lamarck is also an incorrect option. Lamarck की अगर हम बात करें तो he has major contribution in evolution and he proposed the theories such as inheritance of acquired characters, inheritance of acquired characters, use and disuse, increase in complexity, use and disuse, etc. This is also an incorrect option. Pasteur gave like Pasteur contribution is in the process pasteurization. पास्चराइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है बेसिकली जो लिक्विड होता है उसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है टू किल द माइक्रोब्स दिस इज द टेक्निक विच वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्टर साइंटिस्ट पास्टर करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे बी दैट इज लिनेस आंसर इज बी लिनेस I hope you understood it well. Best of luck.